determining the cause of a morning hyperglycemia of a morning hyperglycemia. Dawn effect, Somogai effect, insufficient insulin. Okay. Dawn effect, DAWN, dawn effect. Somogai effect, Somogai effect. Rebound hypoglycemia, rebound hypoglycemia. Insufficient insulin, insufficient insulin at night. पहले नंबर पर आएगा बेड टाइम। डॉन इफेक्ट आपका बेड टाइम में नॉर्मल आएगा। सोमोगा इफेक्ट बेड टाइम में भी आपका नॉर्मल ही रहेगा। इनसफिशिएंट इंसुलिन भी नॉर्मल। दो से लेकर के 3 AM डॉन इफेक्ट आपका नॉर्मल। सोमोगा इफेक्ट 2 से 3 AM आपका लो आएगा। इनसफिशिएंट इंसुलिन आपका एट नाइट में खास करके ये हाई रहेगा। मॉर्निंग में डाउन इफेक्ट आपका हाई। सोमोगा इफेक्ट आपका हाई। इनसफिशिएंट इंसुलिन एट नाइट आपका हायर ही रहेगा। कारण डॉन इफेक्ट का कारण है ए नॉर्मल शुगर ड्यू टू रिलीज ऑफ अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन एट नाइट ऑकर्स इन ऑल डायबिटिक मेलाइटस या नॉर्मल। ए नॉर्मल शुगर ड्यू टू release of a counter regulatory hormone at night occurs in all diabetic mellitus and normal occurs in all DM या फिर नॉर्मल। सोमोगा इफेक्ट का कारण क्या है? लो शुगर रिलीज काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन promote
hepatic promote hepatic glucose production, promote hepatic glucose production and transient insulin resistant and transient insulin resistant insufficient इंसुलिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है. ट्रीटमेंट आर एक्सपर्ट. डाउन इफेक्ट में हाइक ऑफ नाइट डोज ऑफ इंसुलिन, हाइक ऑफ नाइट डोज ऑफ insulin, avoid carbohydrate at bedtime, avoid carbohydrate at bedtime, do after dinner exercise, do after dinner exercise, do after dinner exercise. एंड ट्रीटमेंट सोमोगा इफेक्ट में ट्रीटमेंट क्या होगा? डिक्रीज न्यूट्रल प्रोटामिन हेजिड्रन, Hegidorn, that is neutral protamine Hegidorn. Dose at night. Go to bed at higher blood sugar level than usual. Go to bed at higher blood sugar level than usual. Eat carbohydrate snack at bedtime. Eat carbohydrate snack at bedtime. Increase night dose. Insufficient insulin के क्षेत्र में. Increase night dose. Decrease carbohydrate. Do after dinner walk. Do after dinner walk. Do after dinner walk. टेस्ट ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप एट 2 से लेकर के 3 AM एंड ऑन waking up. टेस्ट ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप. CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट. सोमोगाई phenomenon should be suspected in patient presenting with atypical hyperglycemia in the early morning that resist treatment with increased insulin doses. सोमोगाई phenomenon
Menon should be suspected Somogai phenomenon should be suspected in patient presenting with atypical hyperglycemia in the early morning that resist treatment with increased insulin doses. If nocturnal blood sugar is confirmatory or if suspicion is high, reduce evening or bedtime insulin. Clinical sign including weight gain, normal daytime blood sugar level, relatively low HbA1c suggest over treatment. Clinical sign including weight gain, normal daytime blood sugar level and relatively low HbA1c suggest over treatment. Clinical sign including weight gain, normal daytime blood sugar level, relatively low HbA1c suggest over treatment. Okay. Diabetes mellitus complication.
diabetes mellitus complication. Diabetes mellitus complication. Macrovascular disease. Macrovascular डिजीज, इसमें आपका ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक स्ट्रोक, माइक्रोवास्कुलर डिजीज, माइक्रोवास्कुलर में माइक्रोवास्कुलर डिजीज, माइक्रोवास्कुलर डिजीज, इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, नॉन प्रोलिफेरेटिव, उसके बाद प्रोलिफेरेटिव, मैक्यूलर इडीमा, हार्ट में आपका अंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियक फेल्योर, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, माइक्रोअल्बुमिनुरिया, मैक्रोअल्बुमिनुरिया, एंड स्टेज रेनल डिजीज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओस्टियोमाइलिटिस, amputation. This topic deals with only peripheral neuropathy, postural hypotension,
gastroparesis, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemia state. This topic deals with only this topic deals with only peripheral neuropathy, postural hypotension, gastroparesis, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemia state, HHS, hyperosmolar hyperglycemia state. फिगर 79 मैक्रो एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया। नाउ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी treatment. Established symptomatic diabetic neuropathy is generally not reversible. Established symptomatic diabetic neuropathy is generally not reversible. Established symptomatic diabetic neuropathy is generally not reversible. The goal of management is to slow further progression and prevent complication including diabetic foot ulcer, arthropathy and falls. The goal of management is to slow further progression and prevent complication including diabetic foot ulcer, arthropathy and falls. Four main components of diabetic neuropathy treatment are
main component of a diabetic neuropathy treatment are: number 1, blood sugar control. Second one, lifestyle intervention, diet and exercise. Lifestyle intervention जिसको हम करेंगे किस तरीके से, डाइट एंड एक्सरसाइज करके. थर्ड वन, फूड केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. फूड केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. Comprehensive food examination once a year and a visual examination of a feet at each visit. Comprehensive food examination comprehensive food examination once a year and visual examination of a feet at each visit, usually every 3 से लेकर के 4 month. usually every 3 से लेकर के 4 month. control of a painful neuropathy. Control of a painful neuropathy. Pharmacotherapy for painful diabetic neuropathy. Pharmacotherapy for painful diabetic neuropathy. Pharmacotherapy for painful diabetic neuropathy. So इसमें हम देखेंगे ड्रग का क्लास, comorbidities favoring use, comorbidities favoring avoidance. Drug class. Comorbidities favoring use. ज्यादा लगेगा. Comorbidities favoring avoidance. ड्रग क्लास में सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर. सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसको बोलते हैं SNRI. सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर.
इसमें ड्रग कौन आता है? डुलोक्सेटाइन। डुलोक्सेटाइन कितना देना पड़ेगा? 20 से लेकर के 30 mg OD देना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? मार्क्स की अगर हम बात करेंगे 60 से लेकर के 120 mg तक हम दे सकते हैं। उसके बाद वेनलाफैक्सिन क्या डोज देंगे? 37.5 mg OD। और मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे मैक्स डोज की तो 75 से लेकर के 225 mg तक हम दे सकते हैं। नाउ कॉमोर्बिडिटीज फेवरिंग यूज: डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें कॉमोर्बिडिटीज फेवरिंग यूज में SNRI क्लास के जितने भी ड्रग होते हैं ये क्या क्या करेगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइब्रोमाइल्जिया, comorbidities favoring avoidance: restless leg syndrome, restless leg syndrome। दूसरा sexual dysfunction, angle closure glaucoma, then tricyclic antidepressant TCA। भगवान, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट TCA। इसमें ड्रग आएगा एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टिलिन, जो कि कितना देंगे? 10 से लेकर के 25 हम देंगे mg पर डे। मैक्स हम कितना दे सकते हैं? 100 mg दे सकते हैं। उसके बाद नॉरट्रिप्टिलिन 10 से लेकर के 25 एंड मैक्स हम दे सकते हैं 100 mg। डेसिप्रामाइन 25 mg पर डे हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज हम दे सकते हैं 200 mg। ये कॉमोर्बिडिटीज फेवरिंग यूज में क्या आएगा? डिप्रेशन इसमें भी आएगा, एंजाइटी आएगा, इंसोम्निया आएगा। दो तो कॉमन हो जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड कॉमोर्बिडिटीज फेवरिंग यूज में कार्डियक डिजीज, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल,
prolonged QT interval, orthostatic hypotension, orthostatic hypotension, hypotension, sexual dysfunction, sexual dysfunction, urinary retention, urinary retention, angle closure glaucoma, angle closure glaucoma, angle closure glaucoma. Now drug class में last one is gabapentinoid anti-seizure medication. Gabapentinoid, gabapentinoid, pentinoid anti-seizure, anti-seizure medication. इसमें प्रेगाबालिन आता है, प्रेगाबालिन इसका डोज होगा 75 mg से लेकर के 150 mg पर डे हम दे सकते हैं। मैक्स डोज की बात करें 300 mg। उसके बाद गाबापेंटिन, गाबापेंटिन, गाबापेंटिन डोज क्या देंगे 100 mg से लेकर के 300 mg, 1 से लेकर के 3 टाइम ए डे, 1 से लेकर के 3 टाइम ए डे। मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे तो 900 से लेकर के 3600 mg हम मेडिकामेंट दे सकते हैं। कॉमोर्बिडिटीज फेवरिंग यूज में आपका आ जाएगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एसेंशियल ट्रिमर, एसेंशियल ट्रिमर, insomnia, comorbidities favoring avoidance, substance abuse, peripheral edema, chronic obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Select a drug based on comorbidities, drug interaction, side effect profile, and cost. Start at bedtime with a low dose and gradually increase over a period of several weeks. Avoid amitriptyline and or nortriptyline in heart disease. Tricyclic antidepressant can be taken with gabapentin and pregabalin but not with duloxetine. Side effect of TCA are dry mouth, sleepiness, dizziness, constipation, urinary retention in those with prostate enlargement. Do not take duloxetine with other serotonin
or norepinephrine uptake inhibitor, including tricyclic drug, but can be combined with pregabalin or gabapentin. Side effects of duloxetine and venlafaxine include nausea, somnolence, dizziness, decreased appetite, constipation, insomnia, diaphoresis, sexual dysfunction, increased blood pressure, heart rate occur with venlafaxine. Side effects of pregabalin and gabapentin are dizziness, somnolence, peripheral edema, weight gain. If do not improve on one drug by 6 weeks, add another from other class. Example, duloxetine plus pregabalin. Other drugs apart from those mentioned above are valproic acid, carbamazepine, alpha lipoic acid, 600 mg per day. Non-pharmacologic therapy are capsaicin cream and patches. Lidocaine patch should stay for 12 hours a day. Transcutaneous electrical nerve stimulation, that is TENS, and spinal cord stimulation. Okay. Select a drug based on comorbidities, drug interaction, side effect profile, and cost. Start at bedtime with a low dose and gradually increase over a period of several weeks. Avoid amitriptyline or nortriptyline in heart disease. Avoid amitriptyline or nortriptyline in heart disease. Tricyclic antidepressant, that is TCA. Avoid amitriptyline, nortriptyline in heart disease. Tricyclic antidepressant can be taken with gabapentin and pregabalin, but not with duloxetine. Tricyclic antidepressant, अमिट्रिप्टिलिन नॉरट्रिप्टिलिन को हार्ट डिजीज में नहीं लेने का. ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैन बी टेकन विथ gabapentin, pregabalin,
आप ले सकते हो, बट नॉट विथ डुलोक्सेटाइन। डुलोक्सेटाइन के साथ आप नहीं ले सकते हो। ओके, but not with duloxetine. Now, side effect of a tricyclic antidepressant, ड्राई माउथ होगा, स्लीपीनेस, डिजीनेस, constipation, urinary retention, in those with prostate enlargement, prostate enlargement. Do not take duloxetine with other serotonin or norepinephrine uptake inhibitor, including tricyclic drug, but can be combined with pregabalin, gabapentin. Okay. Do not take duloxetine. Do not take duloxetine with other serotonin or norepinephrine uptake inhibitor, including tricyclic drug, but can be combined with pregabalin or gabapentin. Side effect of a duloxetine. Side effect of a duloxetine and आपका venlafaxine ये क्या इंक्लूड करेगा? नोजिया, उसके बाद आपका सोमनोलेंस, डिजीनेस, decreased appetite, constipation, insomnia, diaphoresis, sexual dysfunction, increased blood pressure and heart rate occur with venlafaxine. Increased blood pressure and heart rate occurs with venlafaxine.
Side effect of pregabalin and gabapentin. Side effect of pregabalin and gabapentin. Dizziness, somnolence, peripheral edema, weight gain. If do not improve on one drug by 6 weeks, add another drug from other class. Example, duloxetine plus pregabalin. Other drug apart from those mentioned above are valproic acid, carbamazepine, alpha lipoic acid जो कि 600 mg पर डे. सेकेंड, नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट देना चाहिए. नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए. इसमें कौन सा आएगा? जनरली आपका कैप्साइसिन आएगा. कैप्साइसिन क्रीम and patches. Lidocaine patch should stay for 12 hours a day. Transcutaneous electrical nerve stimulus जिसे बोला जाता है TENS and spinal cord stimulation. फंडामेंटल ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी क्लासिफिकेशन. सोमाटिक के अंदर आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें ग्लोब एंड स्टॉकिंग, डायबिटिक आमियोट्रोफी. मोनोन्यूरोपैथी में आपका कार्पेल टनल सिंड्रोम, फेमोरल, सियाटिक, ऑल्नर, लैटरल पॉप्लिटियल, ट्रंकल
ट्रंकाल cranial nerve 3 and 6, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में cranial nerve 3 and 6, डाइप्लोप्लिपिया विसरल में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, damage to nerve that control the internal organ, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinary, pseudomotor and vasomotor, neuroendocrine system. क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी देखेंगे।